So today we discuss about some important questions related to PGT computer science. So KVS PGT computer science. First we discuss this full length test series. So let's go test 3. Full test 3. We discuss only the part of subject specification. So our first question is this one. See, in this case, the algorithm which train both input features and output level. It aids in the establishment of a link between variables by estimating how one influences the others. So our answer is regression testing. So regression testing, it is basically the machine learning key concept. It classified as supervised learning because algorithm is taught using both input and output is there. That's why it is supervised learning. It aids establishment of a link between variable by estimating how one influence the others. Next is classification. It is also a supervised machine learning process which model the predict proper level of incoming data. So in classify fully trained using trained data, that is the thing. Now association rules, it is unsupervised learning strategy used to discover the links between variable in a large database. So determine the set of element in the dataset applied together. The association rule improve the effectiveness of marketing strategy. Last is clustering. It is unsupervised technique. So clustering is a way organize the object into cluster so that object with highest similarity stay in one group. Okay, so that is the meaning of clustering. So see, clustering and association, these two are unsupervised. Classification and regression are supervised, and regression testing is related to the link between the variable by estimating how one influences the other. Okay, and in classification, you can, the name already suggests that you classify the thing. Next is, which of the following is executed finally? Final block is executed. Next, in Python dictionary, the unique is related to key. um, Multi-user operating system is used by server. Next, object O and C, polymorphism, inheritance, encapsulation, abstraction is concept are related to object oriented DBMS. Now, which are the special symbol argument used to pass the value of dictionary keyword argument, or when unclear how many keyword argument are there? So KW ARGS. Next is the MAC address, also known as the physical or hardware address. Next, Hadoop data node and name node. In Hadoop, data node is worker node, data means worker, and name is master. Next, ARPANET is developed by USA. Next, IoT is which is not concerned data storage privacy security, is a concern about IoT, Internet of Thing. Now, which of the following can be used to delete the dictionary? So delete the dictionary, we use del keyword for deleting the dictionary. Hmm? Fake. Next is, which of the following temp dictionary, that is del keyword we use to delete the dictionary. Delete a dictionary. Now here if you see del keyword, the Python statement will delete the entire Python dictionary, and we cannot access the temp. After this statement execute, we will get if define error. Okay. Now if we temp dot clear is a clear method is used to the Python which delete all key value pairs from the given dictionary. Okay. And the pop method will delete the key value pair which mention, जो mention है उसी को ही delete करता है pop. And clear method see clear the key value pairs.
ठीक है। एंड सी डेल कैन बी यूज टू डिलीट द डिक्शनरी एंटायरली डिलीट करने के लिए हम लोग डेल कीवर्ड यूज करते हैं। पॉप एंड क्लियर विल जस्ट क्लियर द कंटेंट। नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट टाइप ऑफ गेट। ए अगर जा रहा है यहाँ पे ए, देखो, सो दिस इज ए बार बी बार, ए बार बी बार, this is what type of gate? This is actually NAND NOR gate. NOR gate. So A complement B complement, A complement plus B complement plus B complement. Using De Morgan law, it will break it. So applying the both law, y equal to A complement plus B complement whole complement. So we can break it. So we get AB, that is AND gate. Okay, next is PaaS is a platform as a service. Next class A IPv4 is 00 से start होकर 127 तक जाता है, ठीक है। सी दिस इज द होस्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस पहले नेटवर्क एड्रेस आता है, उसके बाद होस्ट एड्रेस आता है। सो यहाँ पे देखो टोटल 5 एड्रेस है ABCDE, ठीक है। IPv4 32 बिट इंटीजर एक्सप्रेस, दिस इज 8 बिट फील्ड 48, ओके, ठीक है। एंड क्लास बी स्टार्ट फ्रॉम 128 से 191, क्लास सी रेंज फ्रॉम 192 टू 223, एंड क्लास डी 224 टू 239, एंड क्लास ई 240 अप टू 255, ठीक है। or you can find like C class A na 1, then 1 like this way also you can find. Next is this is called distributed denial of services. Distributed denial of services is which is a cyber attack that disrupt the online services and resources of a targeted server. ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है टारगेट एंड फ्लड इंटरनेट ऑफ ट्रैफिक, ओवरवेलमिंग देम विद द फ्लड ऑफ इंटरनेट ऑफ ट्रैफिक। तो दिस मेक टारगेटेड ऑनलाइन सर्वर अनयूजेबल एंड, ठीक है, ह्यूज लॉस कर देता है, ठीक है। सो दैट इज द डिनाइल ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेटा फ्रेम, नॉट करेक्ट। सो देखो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, कलम फ्रॉम वन डेटा फ्रेम आर एडेड टू दोस अनदर डेटा फ्रेम columns. The identical column appear in two different row and data set. Join function is used to combine the column. Merge function is used to combine the column. ठीक है, यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन 1 है, कलम फ्रॉम वन डेटाबेस डेटा फ्रेम आर एडेड टू दोस फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम। यहाँ पे CSV फाइल रीड कर रहा है, ठीक है, डेटा 1 का डेटा 2 का, एंड कॉन्कैट हो रहा है। सो इट इंडिकेट दैट नीड्स टू कॉम्बाइन। Option 2, the identical column appear in two different row of data, two different data set. So PD concat we use to combine the rows of the two data frame. Then phone number merge also we use to merge function is to combine the column, ठीक है। और join function we are not used to combine. Next, dash is a memory management schema that support user view of RAM. So segmentation is a memory management schema that supports user view, ठीक है। यूजर व्यू कौन सपोर्ट करता है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट फैसिलिटेट यूजर, ठीक है, यूजर परसेप्शन से वर्क होता है। एंड पेजिंग इज बेसिकली इट इज अ फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू द फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। Next is phishing is a type of cyber attack that attempt to obtain the data like sensitive data like username, password and more. It is typically carried out by email spoofing, instant messaging and text messaging. ठीक है। व्हाट डज द साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट। सो साइबर सिक्योरिटी क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू अबाउट पाइथन लिस्ट। सो बोथ 1 and 2 डायनामिक एंड होमोजेनियस, ठीक है। पाइथन लिस्ट इज डायनामिक एंड होमोजेनियस मीन्स सेम टाइप का, हेटेरोजेनियस होमोजेनियस मीन्स सेम होता है, बट लिस्ट में हम लोग इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग वैल्यू ऑल वी कैन स्टोर।
सो नाउ नेक्स्ट इज तो मैच द फॉलोइंग है। सो कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है देखिए, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, अच्छा फ्रेम रिले है, X.25 है एंड PSTN है। सो PSTN basically is a circuit switched network, ठीक है। circuit PSTN unique ID called telephone number, circuit switched means that is dedicated line is there, ठीक है। it is reliable, more reliable than packet switching। so PSTN basically public switch, TN means telephone network, ठीक है। टेलीफोन हम लोगों को पता है कि एक टेलीफोन लाइन रहता है, सो लाइन रहता है इसलिए डेडिकेटेड लाइन रहता है, इसलिए टू convert the voice communication, that is the reason for PSTN is circuit switch network। Next, X.25 is one of the oldest packet switched network services. It was developed before OSI model. The protocol suite is the design three conceptual layer which correspond to closely three layer or there seven layer, ठीक है। X.25 is defined basic protocol level of architecture। So X.25 is virtual circuit, X.25 is virtual switching, virtual switching or packet switching and internet the main implementation of internet is a datagram switching network, which is IP network protocol, ठीक है। IP network protocol is datagram network। now frame relay is packet switch or virtual, it is also a virtual frame relay, last one 4A, okay। frame relay also A option is correct, and for internet is datagram circuit, so message is not there, ठीक है। next is arrange it according to geographical area। so पहले आएगा C LAN, then आएगा A man, then B one। next is which of the following built-in security, list बहुत ही कम रहता है सिक्योरिटी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में provided list। So infrastructure from the cloud is a form of cloud computing that provide virtualized computing resources over the internet, ठीक है। IaaS is the one of the three main along with the software as a service and platform as a service, the least amount of security provided by IaaS, infrastructure as a service provide the least, ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट होता है, मोस्ट कहाँ पे होते हैं, SAS में, SAS में मोस्ट सिक्योरिटी, एस इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी लाइक दिस, एस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिक्योरिटी, ठीक है, SS। नेक्स्ट इज अल्टर टेबल इज यूज टू चेंज द टेबल स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक, हाँ चेंज करने के लिए हम लोग अल्टर यूज करते हैं। और उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन ट्रांसफॉर्म द डेटा सेट इन अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम एन array। next is object storage is a cloud, what type of storage store the unstructured data like photos and video, and that is object storage। hmm. File storage is hierarchical, block storage is also they divide the into block of equal size। next printing is called NLP, pre-processing text data for NLP। painting is a common step pre-processing data, ठीक है। स्ट्रीमिंग क्या है देखो, स्ट्रीमिंग है ए प्रोसेस स्ट्रीम्स और रिमूव द लास्ट few character from a word often leading incorrect meaning and spelling, that is called streaming। नेक्स्ट है कौन सा करेक्ट है, दैट इज 1 3 4, ए वाला नहीं, 1 3 4, हाँ दिस वन इज नॉट करेक्ट, 2। next is which among the following not correct, that is not correct, bitcoin is a medium of payment authorized by the रिजर्व बैंक ने authorization नहीं दिया है bitcoin को। which of the following are inadequate general rules of conduct, all of the above are part of the netiquette। respect the privacy, present your best side online and don't abuse any other। हाउ डू यू रीनेम, रीनेम करने के लिए हम लोग कॉलम्स नेम, पहले क्या आता है, पहले ओल्ड नेम आता है उसके बाद न्यू नेम, ठीक है।
विच फंक्शन हम लोग यूज करते हैं राउंड के लिए, राउंड टू डेसिमल नियरेस्ट इंटीजर, दैट इज राउंड फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, दैट इज डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो इज द अच्छा नो एरर आएगा क्या, कौन सा आएगा, डिवीजन बाय जीरो आउटपुट आएगा, प्रिंट एरर, अगर नहीं एरर तो नो एरर होगा। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर रेज द जीरो डिवीजन एरर। पाइथन इंटरप्रेटर ही रेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर बी एफ ओपन विच मेथड बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग, आर बी बी फॉर बाइनरी। नेक्स्ट लैन विच टाइप ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ वैलिड। ठीक है, उसके बाद कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल कम्युनिकेशन 234 SMTP POP and IMAP part of email communication, which are the not allow slicing, set not allow slicing. ठीक है, reference point, what is the default value is 0 for offset, 0 for the beginning of the file, 1 for the current position and 2 for the end. Next, ठीक है, Windows the first version of only C is correct. Windows 9 is the incorrect, you have to find. Windows 9 is the least popular version operating system. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करेक्ट, फर्स्ट वर्जन 1985 में विंडोज का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था। लेटेस्ट वर्जन 2022 में जो हम लोग यूज करते हैं विंडोज 11। सो व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट दिस इज आउटपुट यू विल गेट व्हेन यू प्रिंट आई। सो प्रिंट आई दैट इज की प्रिंट करेगा डिक्शनरी का। मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प द एआई टू बिल्ड द एप्लीकेशन। ठीक है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद दो टेबल, तीन टेबल है। सो इसमें से फाइंड करना है कौन सा, सिलेक्ट द रीना। रीना का है, देखो रीना, नेम रीना। सो रीना इज रीना से ग्रेटर है। रीना का एज देखो कहाँ, यहाँ पे तो रीना का एज ही नहीं है। टेबल बी में, टेबल बी डॉट एज वेर बी डॉट नेम इक्वल टू रीना, बी टेबल बी, दिस इज द टेबल बी, रीना का नाम ही नहीं है। all is should be greater than all value. There is no entry with Rina in the table, so the subquery will return null. So if the subquery return null, the condition become true for all A. So that's why A का सभी डेटा होगा, so होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंट 8 बेस इज ऑक्टल। ठीक है, ब्लॉकचेन में क्या क्या रहता है, ट्रांजेक्शन, हैश पॉइंट एंड टाइम स्टैम्प। Next, which of the not a cloud storage, hard disk. Next is file not exit. Write data to a file even if file write कर लेता है, that is W plus and A plus। R plus में error देता है। What is the which of the following minimize the memory processor speed mismatch, कैश मेमोरी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद काउंटर क्या है, रजिस्टर का पार्ट है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए काउंटर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद वाईफाई, WPA सिक्योरिटी यूज वाईफाई। फर्स्ट टाइप WPA सिक्योरिटी, हाँ वाईफाई क्या कौन सा टाइप का सिक्योरिटी यूज करते हैं, WPA, दैट इज वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA 3। उसके बाद यूनिक्स, यूनिक्स इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर यूनिक्स है। नॉट लैन नहीं है मल्टी यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं है लैन। नेक्स्ट एसक्यूएल क्या है, कौन सा डे, पिक ऑफ द डे डॉट नेम, डेट नेम, नेक्स्ट एट द डे। उसके बाद UTF-8 विच आर द फॉलोइंग एनकोडिंग यूज्ड बाय द पाइथन 3 फॉर स्ट्रिंग।
और स्ट्रिंग के लिए हम लोग पाइथन में UTF-8 यूज करते हैं, ठीक है। UTF-8, there are three type of Unicode are there, 8, 16 and 32 bit. So Unicode for using 8 bits, 16 bits, 32 bits, and American Standard code for information interchange. So version 2 यूज करता था ASCII, but version 3 UTF-8 encoding string. नेक्स्ट, 0 से स्टार्ट करके n-1 रेंज तक चलेगा रेंज फंक्शन। नेक्स्ट, पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉर टेररिज्म के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट, सिंपल बेस्ड एजेंट, current based on the current perception while ignoring the previous one. This agent only succeed in creating the fully visible world. So simple based agent, this agent make judgment based on the current while ignoring the previous one. प्रीवियस वन को इग्नोर करते हैं। मॉडल बेस्ड में तो रिफ्लेक्स deals with the partial accessibility by keeping track area can be seen right now. Okay, goal based agent in AI that is programmed specific task, accomplish the specific task, and utility based agent is the agent which deal with that act not just what a goal is but also optimal approach find करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, it calculate the relationship between two variable and how one would change in response to the change in other. So covariance, it calculate the relationship between two variable. Relationship means that not means a correlation, ठीक है। variance and would change in response to the change of other, ठीक है। नेक्स्ट इज Wi-Fi is देखो 2 and 3 is correct. Wi-Fi use light emitting diode for data transfer, that is incorrect statement. Wi-Fi work very well in dense environment, and in Wi-Fi data transfer speed is about 1 Gbps, and Wi-Fi is light fidelity. The wireless optical networking technology that use light emitting diode LEDs for data transmission. Wireless fidelity is a wireless optimal networking technology that use router, modem, access point, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्रुप बाय फंक्शन, ठीक है, राइट से, ठीक है। उसके बाद which of the not true about SQL, not true. Select statement used in view definition cannot include order by clause. A view derives the data from the database. A view contains copy of the data, and view is not updatable. Order by clause invalid in view. You are updatable when it is false, ठीक है। ठीक है। View must include a primary key, and view must not have a distinct clause. Therefore, it is not always possible that view will get updated without satisfying the above condition. ठीक है। View contain row and column as a real table. ठीक है। इसके बाद ID and ID name have the same value. उसके बाद order by, sort the data, we use order by clause. Next, by default data series starting from 0. Happy state হচ্ছে happy and unhappy, that is utility based agent. Incorrect. It is 5 answer. तो select count star from, natural join होगा दो टेबल में, एम्प्लॉय एंड मैनेजर में, एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। Following will be the content temporary table S is employee manager, ठीक है। Following T is manager salary. So T36 table. Naresh, Suresh, Manesh, Harry, Sam, Harry, ठीक है। Following will be result of natural join above two table. अगर हम लोग natural join करते हैं,
The key thing no natural can happen on column with same which is manager. Harry appear two times the manager column, so there will be four entries. So 1, 2, 3, 4, 5. देखो नरेश हरी हरी 1000 that is okay. Then नरेश हरी 7000 नरेश हरी 7000 ठीक है. सुरेश सैम सैम 5000 ठीक है. मनीष हरी हरी अच्छा ठीक है दिस वे. Next, in computer network, SAN is a majority used to abbreviate storage area network. SAN basically it is a storage area network. Uh, which of the following statement is false? Packet switching leads the better utilization? No. Circuit switching is lead the better utilization. Next, if computer bursts into the flames and if some technical issue arises, it can recover by creating the backup from the copy of the data automatically say you and you won't even know what happened. That is called HDFS. HDFS is that allow the distribution of big data storage backup related. And yarn means yet another resource negotiation. Okay, yet in it come next to the Hadoop ecosystem. It a location where Hadoop data processing is put and MapReduce. It also another part of Hadoop ecosystem. MapReduce ठीक है. MapReduce है yarn है और HDFS है. ठीक है तीनों पार्ट है फॉर बिग डेटा सिस्टम. ठीक है बिग डेटा में HDFS है yarn है एंड मैपिंग है. सो इन HDFS is related to backup ठीक है creating backup and yarn it is yet no another resource manage negotiation. ঠিক আছে resource related that is yarn and mapping you know map reduce. So Hadoop it is a distributed open source multidimensional scalable NoSQL database based on Java HB base run on HDFS and gives Hadoop capability to Google Bigtable. Next is retrieve the data we use queries. Next SQL query false. Actually AD is true, BC false. I think a false water is very much important whenever you solve. Okay, BC means an SQL query content having clause only if it has group by clause. Okay, A false.